Assalamu alaikum, here Zikra Seher. And today we are discussing about a research paper which is on the topic of the critical aspects in applications of the principles of the GLP. GLP is the good laboratory practice. Good laboratory practice is about arranged manners laboratory टेक्निक्स जिसमें हम लेबॉर्ट्री में जो भी काम करते हैं वो एक तरीक़ेकार से होता है। एक पूरा मैनुअल तैयार किया जाता है कि हर लेबॉर्ट्री के अंदर वो दिया जाता है कि इसमें ये काम इस तरह से होगा। एक पूरा पॉम्फलेट होता है जिसके अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि हर चीज़ कहाँ पर अरेंज की जाएगी, कैसे उस पर काम किया जाएगा, क्या उसके रिज़ल्ट होंगे, कोई मिसहैप हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स में क्या किया जाएगा वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस के अंदर आता है। हमारे पास एक रिसर्च पेपर था, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस के बारे में। इसके अंदर हम ने डिफरेंट तरह की जो है ना अहम तरीके इस्तेमाल किए गए थे जो कि गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस के अंदर डिफरेंट जगह पे जो है ना अप्लाई किए गए थे। और उसकी एक शॉर्ट समरी जो है मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी। द समरी इज़ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड एक्यूरेट interpretations is required in the application phase. Each test facility has apply the principle of GLP within its own laboratory. हर जो टेस्ट को है ना अपने लेबॉर्ट्री के अंदर जो है ना अप्लाई किया गया। टेक इनटू अकाउंट बोथ द कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट. Furthermore, the GLP quality system and the quality, all the quality systems is dynamic, not a static one. Continuous improvement depend upon the evolving state of art is essential. As the consequences, there are many difficulties as well as many different ways in applying the principles of GLP. The cultural aspects play an essential role. The knowledge, experience, and fully adherence to the GLP principles, combined with the knowledge of the problems linked to the conduct of the various type of non-clinical laboratory studies, as well as the continuous discussions with the representative of regulatory authorities are mandatory in order to select the correct and adequate method of application. कह रहे हैं कि हम अप्लाई करने से पहले इसका एक प्रॉपर जो है जो टेस्ट सिस्टम होता है वो करते हैं, और रेगुलेटरी टेस्ट अथॉरिटी जो है उसको चेक करवाना और उसको वहाँ से सिलेक्ट करवाना और एडुकेट मेथड के ज़रिए जो है उसको अप्लाई करना, ये मैंडेटरी होता है। इसके इंट्रोडक्शन में हमने कुछ इस तरह कुछ डिटेल्स पढ़ी थी, इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स मैंने निकाले थे। वो ये थे कि दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं GLP की। एक फर्स्ट ये कि rather than rules, they are guidelines, applications, principles that requires interpretation during the implementation in a real situation. Real situation के अंदर हम जब भी अप्लाई करते हैं GLP को तो उसकी ख़ास गाइडलाइन और प्रिंसिपल्स होते हैं। Secondly, they demand a continuous improvement in order to maintain the definitely quality system. They need to interpret the principles of GLP implies flexible and expertise on the behalf of those responsible for their implementation within a test facility. मेरी एक प्रॉपर टेस्ट फैसिलिटी के साथ जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट दिखाई जाती है GLP सिस्टम के अंदर. In this paper, we have the few examples of critical aspects which should be faced during the implementation, not all of which are linked to the revised principle of GLP, namely adequate separation between regulatory or non-regulatory studies, multi-site studies, use of external studies, responsibility and data relevant to the study. ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो कि हमने क्रिटिकल एस्पेक्ट्स जो चेक किए थे GLP के जब हमने उनको अप्लाई किया, और इस पेपर में उनके बारे में डिस्कशन की गई है. एडिक्वेट सेपरेशन बिटवीन रेगुलेटरी एंड नॉन रेगुलेटरी स्टडीज़. For non-regulatory studies, the adherence to the principles of GLP is not mandatory. Such studies are there not subject to inspection by the designated regulatory authorities. In many organizations where the national and international contract research organizations CRO and the sponsors both type of studies, regulatory and non-regulatory, are carried out in the facility itself, on laboratory and on animal facilities. Various solutions can be investigated thereof, which are described and discussed hereafter, all being equally valid in the extent of compliance
with GLP, such as complete separation, separated organization, complete separation and same organization, not separation at all. वो कह रहे हैं कि हम जो है रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी स्टडीज़ के दरमियान जो है सेपरेशन करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें हम रेगुलेटरी स्टडीज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे जिसमें नॉन रेगुलेटरी स्टडीज़ कर सकते हैं। कम्प्लीटली सेपरेशन और सेपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करें तो ये लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें जो है सेपरेशन बिल्डिंग कंपनी और लेबॉर्ट्री ऑपरेशनल एरियाज़ कम्प्लीटली सेपरेटेड इवन इफ़ द लोकेटेड इन द सेम बिल्डिंग। अगर सेम बिल्डिंग में फिर भी उनको बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है जहाँ पे अपने सेपरेशन वाले प्रोसेस करने होते हैं टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। इन ईदर केस द एडिक्वेट सेपरेशन बिटवीन द टू सेम टाइप ऑफ द स्टडी इज़ ऑटोमेटिकली assured by physical and operational and organizational separation. Complete separation and same organization. This option is most complex to manage, control, or operationally. It requires that the personnel, the facility and the organization adopt two different type of standard according to the activity concerned. This is road with can follow particularly where the number of regulatory studies is limited compared to the volume of the non-regulatory work. It must not forget in the context that the quality has a cost. Hence, the organization with performance only two regulatory studies according to the principle of GLP. This could be the ideal solution in terms of both quality and cost. Not separation. This option is involved in the coexistence. Both physical and temporal are if the same the active within the same TF facilities. This third road to quality requires the adoption of the one standard of quality alone, such as the one which is the most restricted and which results in the integration of the diverse system and level of quality. Existence within the individual organization such as option is most mandatory of organization where the majority of studies and activities conduct fall under the scope of the principle of GLP. Multi-site studies के अंदर क्या मसला है? All is the multi-site studies include activities carried out the number of test sites. It is the single studies which must be conducted according to the principle of GLP. The TF, however, comprises all the test sites where the study will be offered and could also be one of the test sites belong to the sponsor or one of the CRO. The situation is even more complex from the practical and managerial point of view, since the study director and the QA of the TF could be located away from the sponsor. For example, at CRO, yet the very sponsor is also a test site. To ensure an appropriate flow of information, such as communication of the result of QA inspections, deviation from study plan from the various test sites, including also the sponsor and other CRO, may not be easy or even at all possible. Use of external sites. Different and more complex is the situation where the external sites such as an entire laboratory and in such the management of the DF can ensure directly monitoring by studies director and quality assurance, but it is the certainly be more difficult for the study director to guarantee GLP compliances of activities conduct of the such sites. Responsibilities, the new GLP requirements thereof may of explicit need of documentation and other things organization को मैनेजमेंट करना पड़ता है और नेसेसरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को चार्ट दी जाए, जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स दिए जाएँ, उन्हें क्लैरिफाई किया जाए डिफरेंट तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में GLP की, उनको वे किया जाए इस एम से कि किस तरह हम डिफरेंट तरह के फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिफरेंट तरह के प्रिंसिपल्स हैं GLP के, उसे किस तरह से मैनेज करना है, उनको एक प्रॉपर जो है SOP के साथ हम लोग पूरा चार्ट तैयार करके देते हैं। कंक्लूजन क्या होती है हमारे पास इस पूरे रिसर्च पेपर की हमारे पास ये है कि फ़ाइनल एम ये था कि फैसिलिटीज़ जो है एक्सेप्टेंस की ऑफ डाटा और बोथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल जो है
वो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट बना कर दिया जाए सेफ्टी के लिए, सेफ्टी प्रोडक्ट के लिए। हाई डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाए, इंस्ट्रेंसिक नीड को देखा जाए और हाईलाइटेड किया जाए फ्लेक्सिबिलिटीज़ को, एडिक्वेट और सूटेबल नेचर को जीएलपी की, और लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएँ प्रिंसिपल्स को और रिस्पॉन्सिबल हो एप्लीकेशंस के बारे में। और आज each TF is in the fact asked to apply the principles of GLP its own context, which is unique both about the organization point of view and from the cultural perspectives. शुक्रिया।